part 2, Maths Revision, chapter 14, Statistics. In the first part, we solved objectives, fill in the blanks, yes, number 1 to 10. And in this part, we are going to see answer the following in very short. So you need to do calculations, but that can be rough work. Okay? So 10 more questions, which brings the tally of 20. Alright? Let's see the first question. Are you ready? Yes. Be attentive. For a grouped data, x bar means mean is equal to A, assuming in both the methods, step deviation and assuming method, plus sigma fi di upon sigma fi. ये कौन सी फॉर्मूला है? which method? Assuming method. What is di? Very important. Di is xi minus a. That's the answer. Okay, finished. Next. For a grouped data, x bar is equal to, formula to find mean. A plus sigma fi ui upon sigma fi into x. Which method? Step deviation method. What is ui? ये ui क्या है? Same here, xi minus a upon x. That's the answer. Is that clear? Yes. Laddu, see the word? This ball sits. Yeah, plus in the center. Okay, next. If sigma fi is 78, sigma fi di is 0, and x bar is 12.5, then find A. Once again, sigma fi is there, sigma fi di is there. So which formula to find A? Correct. X bar is there and we have to find A. In that formula, there are 4 terms, out of which 3 are known, and the 4th one we have to find. So very carefully I'll write the formula. X bar is equal to A plus sigma fi di upon sigma fi. As I said, there are 4 terms, 4 quantities. 1, 2, 3 and 4. Out of this 4, we know 3. Substitute them. Is x bar known? Yes. It is 12.5. Is A known? No. That is what we are supposed to find. Sigma fi di 0 na? 0 upon sigma fi 0 upon anything is 0. So 12.5 plus is equal to A plus 0. So what do you got? A is equal to 12.5. So this A is equal to 12.5. Got it? This type of objective questions can be there. Okay? Check. So most of the questions are of this kind here. Okay? So you'll have a good practice of this type of objective questions. Are you ready for the next one? Now number 14. If x bar, that is median, correct? Yes. What yes? Mean. ये गलती करते हैं. मैंने intentionally पूछा median 28. Mean 28. Assume mean 30. Sigma fi also called n, number of observations 50. Height and then find sigma fi ui. After looking at those quantities, terms, alright, which formula should be written? For finding the mean. For finding the mean. Mean is equal to A plus sigma fi ui upon sigma fi multiplied by, and you are supposed to find sigma fi ui. ये चाहिए ये. My goodness. मिल जाएगा. Don't worry. First you put all the available values. So what is x bar? 28. ठीक है.
is equal to A 30 plus सिग्मा FI UI, वही तो हमें ढूंढना है, सिग्मा FI into class height। अच्छा, पहले तो जो हमको वैल्यू ढूंढनी है वो ये सेकंड टर्म में, शिफ्ट दिस फर्स्ट टर्म टू द लेफ्ट साइड, सो 28 माइनस इज इक्वल टू, यहाँ चिल्ड्रन ये टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 0, so what you got, sigma FI UI upon, so ये क्या आंसर आया, 2 with minus sign। Can I bring this 5 on other side? So वो multiply होगा, multiply by 5, that is equal to sigma FI, so sigma IE, sigma FI UI, 2 5 are 10 with, so sigma FI UI is minus 10। Clear? समझ में आया क्या? बी कैपुल सेकंड टर्म में है, आई कैप सेकंड टर्म है, एज इट इज, या ये मल्टीप्लिकेशन है, सो यू कैन कैंसिल दैट, इसको यहां मत कैंसिल करना, कोई यहां भी कैंसिल करता है, बीच में दीवार है प्लस की विच सेपरेट्स द टू टर्म। नेक्स्ट इज नंबर 15, ऑलराइट, व्हाट इज दैट, इफ sigma Fi is 100, assume mean A is 20, mean is 20, H is 15, then find sigma Fi। क्या ढूंढना है, सिग्मा Fi, so कौन सी फॉर्मूला लगेगी, assume mean, श्योर ना, और क्या है फॉर्मूला, x bar is equal to no H, no H, and this is what we are supposed to find। Children, यहाँ स्टेटमेंट में X दिया है just to confuse you, अब गलती से वहां H लिख देंगे, इसका कोई काम नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन में भी H की वैल्यू थी नहीं, सर ने डाल दी, मैंने ही डाला यहाँ क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन में H की वैल्यू was not given। Is that clear? Okay, so I'll put the value, बोलो, X bar 20, A 20 plus sigma Fi Bi upon sigma Fi 100। अरे बाप रे, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को ले जाओ, 20 minus 20 is equal to sigma Fi Bi upon, ये तो 0 हो गया, और 0 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा, that is equal to sigma Fi IE, sigma Fi Bi is equal to 0 into anything is 0, so sigma Fi Bi is equal to 0। Okay, is that clear? Understood? That's how we find it। यहाँ H का कोई काम नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में दिया गया है, राइट? तो बाय मिस्टेक आप into H लिख देंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 0 आ गया था नहीं। चल नेक्स्ट, what is the formula to find mode of classified data? Mode is Z, that is equal to N plus F1 minus F0। in the test कुछ बच्चों ने फॉर्मूला लिखी F0 minus F1, be careful, 2 times F1 minus F0 minus F2, इसको ब्रैकेट में कर दो, multiply by, this is the formula to find mode for a group data, for a classified data, for a frequency distribution। Okay, next, what is the formula to find median of a classified data? Median, okay, all right, and median, that is L plus, बोलिए, N by 2 minus cumulative frequency whole upon, इसको पूरा ब्रैकेट में लिखते हैं into H। That is the formula to find median of a group data। Again, इस प्रकार का sum, what is mean? What is assume mean? What is sigma Fi? What is sigma Fi UI? Find sigma Fi UI है, so which formula? Correct, step deviation, so x bar is equal to A plus
sigma FIUI upon sigma FI into H, and this is our target. चलिए x bar क्या है 30, what is a 20 plus what is sigma FIUI 20 upon what is sigma FI 25 multiplied by ये h वाली टर्म ये है, उसको सेपरेटली रखो, बोलो 32 माइनस दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 जाने 5 5, so 4h upon what is the answer of this 4, 5 को बाजू लाओ multiplied by 5, 4 को नीचे ले जाओ upon 4, that is equal to h, h अकेला रह गया, 4 4 cancel, so what is the height, what is the class height, class length, h is equal to, is that clear? Next to उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Class and frequency is given 0 to 10 frequency is 5, 10 to 20 frequency is 15, 20 to 30 class frequency is 30, 30 to 40 class frequency is 70, and 40 to 50 class frequency is, so frequency distribution is given, कोई और information नहीं है. For the above information find n by 2 minus find n by 2 minus ये कहाँ बनता है n by 2 माइनस मीडियन, तो वो मीडियन वाली प्रोसीजर करनी पड़ेगी, हमें पूरा मीडियन नहीं ढूंढना है, ओनली n by 2 माइनस f. दिस वाज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, ये क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. ऑलराइट, चलिए तो what we have to find n by 2 minus so I hope you have detected कि ये हमें कहां से मिलेगा, मीडियन ढूंढने की प्रोसेस से. यू विल गेट इट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मीडियन. मीडियन में कौन सी कॉलम लगती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहां लिखता हूं क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF F क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50. फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, 15, 13, 17, 10. टोटल करेंगे 30, 40 और 60. सिग्मा FI, that is F. Okay, cumulative frequency of the first class, second class 5 plus 15, 20, 20 plus 13, 33, 33 plus 17, 50, 50 plus 10, 60. अब मीडियन के लिए अब मीडियन के लिए इसको देखना पड़ेगा, n is equal to 60 and that is even, so n by median is equal to the value of n by 2th observation. पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, 1 mark का है ना, so that is 60 by 2 and that is 30th. Now go through the cumulative frequency from top to bottom and get the number which is just bigger than 30. 5 is not bigger than 30. This is not bigger. Yes, 33. So आपको मिल गया मीडियन क्लास. ये उसका लोअर बाउंड्री, ये उसका फ्रीक्वेंसी. लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. उसके ऊपर के क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं CF. आपकी समझ में आया? चलिए अब हमें सिर्फ ये ढूंढना है n by 2. यहाँ n क्या है, n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 60 by 2 that is 30 minus 20 and that is 10. So आपको आंसर मिल गया. What is that? n by 2 minus CF is equal to 10. देखा, it's an objective question, लेकिन काम कुछ ज्यादा ही करना पड़ा. All right, चलिए I'll erase that part and see the next one. Are you ready for the next one? Yes. Oh, that is a question from 9th standard. Find mean of 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4 and 2 upon 3 and 1 upon mean. Sum of observations upon number of observations. मैं पहले sum of observations कर दूं. Sum कर दूं, टाइटल दे दिया. 1/2
plus 3 by 2 plus 2 by 3 plus 1 by 2. What is the LCM? 6. 3s are 2s are 2. 3 1s are 3. 3 3s are 9. 2 2s are 4 or 2 1s are 2. So you got 12, 16, 18 by 6. But this is sigma xi. Sum of observation આપણે કહીએ છીએ sigma xi. Or number of observations શું છે? 1 2 3 4. Number of observations are 4. And you are supposed to find mean. याद करो formula. Mean is equal to sigma xi upon fi नहीं xi. Xi is observation. There are 4 observations here. चलिए. What is that? 18 upon 6. This is 18 upon 6. Upon. I am putting division sign. Number of observations, that is 4. So 18 upon 6. Now I am putting multiplication. In 5th standard you learn. When you divide, or when you convert division into multiplication, inverse करना होगा. 4 is 1 upon. अच्छा कुछ नहीं होगा. 2 2s are 2 9s are. 3 2s are 3 3s are. So ultimately you got 3 upon 4. And that is your mean. So what is mean here in the last case? X bar is equal to 3 upon 4. Is that clear, children? Yes. Alright. Alright, children. So moving ahead with more objectives. Now there are multiple choice questions. Alright. Question number 21. Okay. Please be very attentive. All these multiple choice questions that we are going to see in this session are from 9th standard. Or 9th standard statistics chapters. Mostly they are from ungrouped data. These questions are from an ungrouped data का mean median mode आपने 9th में पढ़ा है. Alright, so let's see the first question. Rachna had an average score of 46 marks from 6 tests. How many tests Rachna answered? 6. So number of observations 6. And average score is? 45. Average means? Mean. So mean is 45. So from the first statement, the information that we can write symbolically is number of tests, number of observations 6. And average mean of that 45. Alright. Her teacher dropped her lowest score. ये 6 subjects, 6 tests के 6 observations होंगे, marks होंगे. Lowest score out of 6 observations was dropped by her teacher. Her teacher dropped the lowest score, which is 30. जो लोवेस्ट स्कोर था वो 30 था, वो निकाल दिया and calculates the average of the remaining scores. चलिए scores कितने थे? 6 में से एक निकाल दिया. So now score कितने बचे? 5. अब वो 30 कहां से निकालोगे आप? टोटल करना पड़ेगा. This will, you know that formula, x bar is sigma xi upon n. इसको कहते हैं sum of observations, है ना? 6 टेस्ट है तो 6 observations है, 6 scores है, right? तो you can get this because n and x bar is there. उस formula से मुझे क्या मिलेगा? Sigma xi मतलब sum of observations, that is n into x bar. What is n? 6. x bar 45. So ये है sum of observation. अब ऑप्शन देखो, वही कुछ लिखा है, इसलिए उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं. तो ये जो sum of observations है ना चिल्ड्रन, टोटल of 6 scores, उसमें से मैं वो lowest score निकाल देता हूं. So this is new sum of observation अथवा sum of observation of the remaining scores. Remain upon, बोलो mean ढूंढना हो तो upon 5. I hope you understand. कौन सा ऑप्शन है? 45 into 6 minus 30 upon 6. upon 6 तो नहीं है, upon 5 वाले ये दो है. 45 into 5 नहीं, 6 into 45 or 45 into 6. Correct? So answer is D. I hope you have understood this. It is slightly tough,
and this was asked in the board examination. Number of observations या scores 6. Average mean, but what teacher does? बच्ची का स्कोर ऊपर करने के लिए, एवरेज ऊपर करने के लिए लोवेस्ट स्कोर निकाल दिया. And what is that lowest score? 30. So that 30 has to be subtracted from the total of 6 scores. So 6 times 45 is the total of 6 scores minus 30 and divide by remaining observations are 5. Direct भी कर सकते हैं. Are you getting me? So that was number 21. Now 22nd one. In a maths test taken of 35 students. How many students gave the test, appeared for the test? 35. The average score of 15 girls is 10. And that of 20 boys is also 10. 35 students, out of which 15 are girls and 20 are boys. Here I'll write boys and of course girls. Number of girls 15. उसका एवरेज 10. Number of boys 20. और उसका एवरेज 10. ये n1 कहो, इसको n2 कहो. ये n बार x, n2 बार, सॉरी x2 बार. ओके, अलग है. ओके. Which of the following can be calculated based on the data we have? Based on the data we have. हमारे पास जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, on the basis of that, what can you calculate? Option A, we can calculate all three information. All three information मतलब mean, median, mode. नहीं? कैसे mean, median, mode? How can we calculate? बहुत तो हम mean ढूंढ सकते हैं, combined mean. Combined mean. याद करो, combined mean is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar whole upon n1 plus n2. ये फॉर्मूला हमने 9th में देखा है. That is 20 into 10 plus 15 into 10 upon 20 plus 50. So you can calculate mean. Mean calculate कर सकते हैं. Combined mean of all 35 students, वो calculate कर सकते हैं. All right, but not all three. Second option, who gets maximum marks in the class? किसका marks maximum है? Out of 35 students. यहाँ से कुछ पता चलेगा? क्या? कुछ है तो नहीं. Which boy gets minimum marks? यहाँ से boys में से कौन सा boy का minimum marks मिला है? You won't get. कहाँ से मिलेगा? अब तो एक ही रहा है. टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 30. हाँ बच्चों, ये सिग्मा xi किसका? बॉयज का. n1 into x1 बार, मतलब 10 into 20, so 200. 200 is the total marks obtained by boys. उसी तरह 15 into 10, 150 is the total marks obtained by the girls. और बॉयज का टोटल मार्क्स 200, गर्ल्स का टोटल मार्क, अरे भाई यहाँ है ऊपर, सिग्मा xi, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर, so that is 350. So you can find what the total marks obtained by all 35 students. What is the total marks obtained by all 35 students? 350. वो आप ढूंढ सकते हैं ये इंफॉर्मेशन. चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th स्टैंडर्ड का है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों कुछ सिमिलर से लगते हैं. सिग्मा xi, I runs from 1 to 10 minus x bar, and here sigma xi minus x bar. यहाँ भी sigma xi minus x bar. I runs from 1 to 10. What difference do you see? Here you have two different terms because of this minus. બે અલગ term છે. Sigma xi is alone, x bar is alone, and here you have the bracket. So this is xi minus x bar और उसका sigma. और इसको वर्ड में कहते हैं, verbally we call it sum of deviation. Sum of deviation. इसको कहते हैं sum of deviation.
and sum of deviation is always 0. Sum of deviation is always 0. So answer is D. Sigma xi minus x bar, I runs from 1 to 10. That is equal. Bracket में है ना? So this is deviation of mean from observation. Deviation मतलब difference of mean x bar माइनस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन से from observation. शॉर्ट में कहते हैं सिग्मा है तो sum of deviation. Sum of that is always equal to 0. ये वीडियो के साथ एक और वीडियो में 9th स्टैंडर्ड में जो बनाया है हाउ यू आर गेटिंग दैट 0, वो वीडियो में आपको भेजूंगा इसके साथ, तो वहां देख लेना कि ये कैसे सम ऑफ डेविएशन 0 आता है. राइट? ओके, आई एम सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पूरा दिखाने के लिए यहाँ समझ नहीं है. ओके, अंडरस्टूड? तो सर ये क्या है? सिग्मा xi, I runs from 1 to 10 माइनस x बार, वो मैं दिखा सकता हूं. बोलिए वो फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन, यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10. सो आई कैन राइट 10, है ना? सो 10 इंटू x बार इज इक्वल टू सिग्मा इफ I runs from 1 to 10. समझ में आया कि नहीं? मीन इज सिग्मा xi अपॉन n, बट यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10. सो आई पुट 10. सो 10 x bar is equal to sigma xi, where I runs from 1 to 10. बस इसकी जगह पे लिख देता हूं क्या? 10 x bar और आगे है माइनस x bar. लाइक टर्म्स 10 x bar माइनस x bar is 9 x bar. क्या ऑप्शन में है आंसर? अगेन डी, 9. ये याद रखना बड़ा आसान है, मैंने समझा दिया. I runs from 1 to sigma xi माइनस x bar सेपरेट, तो ये 10 है ना, 10 x bar माइनस x bar 9 x bar, सीधा लिखो. यहाँ 5 हो तो 5 x bar माइनस x bar 4 x bar. यहाँ n हो तो n x bar माइनस x bar, so n माइनस 1 x bar. यहाँ 20 हो तो 20 माइनस 1 19 x bar होगा. ये ब्रैकेट हुआ तो हमेशा 0. Is that clear? All right. All right, children. Here we are with more questions, multiple choice questions. Now next is number 25. Mean of 12 observations is 21. Mean is 21. So that means x bar is 21 and 12 observations. So number of observation is 12. When mean and number of observations given है, straight away you find sigma xi की जरूर पड़े n into x bar. फॉर्मूला ये है ना, x bar is equal to sigma xi upon n. So take n on other side. So what is the n? 12 and this 21. जो भी होगा, this is sum of observations. आगे क्वेश्चन देखिए. Multiplying to each observation by 2. ये क्वेश्चन ही अलग है, ये काम नहीं लगने वाला है हमको. ऑलराइट, चलो. Multiplying each observation by 2 and adding 3 to each observation, the new mean is dash. हमें न्यू मीन ढूंढना है. मेरे पास ओरिजिनल मीन है. What is original mean equal to? 21. वो ऑब्जर्वेशन का कोई काम नहीं है. ओके, अब how to get new mean? Whatever operation you perform on observation, हर एक ऑब्जर्वेशन को आप क्या कर रहे हो? Multiplying by 2 and then adding 3. Same operation you perform on original mean. ओरिजिनल मीन पे सेम ऑब्जर्वेशन, सेम ऑपरेशन आप कर दो एंड यू गेट न्यू मीन. सो न्यू मीन इज इक्वल टू ओरिजिनल मीन. पहले क्या करना है? मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2.
So multiplying original mean by 2. So ये result आया, bracket में लिख दिया. And then adding 3 to each observation. मतलब adding 3 to that result. Second last bench, Neil, be attentive, you are not there. Original mean कितना है? 21 multiplied by 2 plus 3. That is 42 plus 3 and that is 45. So answer is C, 45. Clear? Understood? Check. ये जो मैं वीडियो 9 का भेजने वाला हूँ साथ में होगा. Objectives. Watch that also. There are many questions of this kind. Many questions of this kind. And why? Why we are performing the same operation on original mean that is being performed on each observation to get the new data. એક શા માટે એ પણ સમજાવેલું છે એટલે કે તમે જોઈ લે. રાઈટ? આની સાથે જો વિડિયો મૂકી દઈશ. અહીંયા તમારે ખાલી ફર્સ્ટ 10 જોવાનું છે. આપણો ક્લાસમાં થાય છે. રાઈટ? ઓકે? નેક્સ્ટ. ક્લાસ 20 to 25, 30 to 35 and so on. Frequency 2, 5 and so on. Median class of the above data is dash. Median class. मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? मतलब मीडियन ढूंढने की प्रोसेस है. सो क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्या लगेगा? यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. CF. क्लास क्या है? 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55. फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 5, 8, 10, 7, 10 and क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए. 2 plus 5, 7, 7 plus 8, 15 plus 10, 25 plus 7, 32 plus 10, 42 plus. इसको कंफर्म करने के लिए 10, 18, 20, 25, 2 and 4. यस, सेम आया. मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? फ्रॉम n which is odd. So odd होगा तो n plus 1 by 2th observation. n क्या है? 45 plus 1 by 2, 46 by 2 and that is 23rd observation. Move top to bottom in cumulative frequency and find out the number which is just bigger than 23. Is 2 bigger than 23? No. 7? No. 15? No. 25? Yes. इसके बाद तो सब बिगर है, but the very first one है ना. तो ये रहा आपका मीडियन. वही पूछा गया क्या? मीडियन क्लास इज डैश. So which is the median class? 35 to 40. And which option is that? B. Option B. Is that clear? Next one. Okay, you can do it directly. For a group distribution, model class is 20 to 24. Model class is given to you. What is the model class? 24. Then what's the value of L? सीधा मिल गया ना, यही तो L होता है. So that is 20. So option is A. Is that clear? Yes. यहाँ भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं. For a continuous frequency distribution, continuous है. All right. The height of class 20 to 30 by 20 to 30 होगा तो next 30 to 40 होगा. या तो वो भी भूल जाओ, आप 30 minus 20 कर दो. That is your class height. That is your class height. So what is that? Class mark. थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Mid value, central value. Class mark of the class 15 to 30 is that. कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 15 plus 30 45 हुआ ना, वो ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान देते. 45 आ गया. A. एला भाई divide by, so 45 divide by and that is 22.5. So answer is C. Is that clear? The next one. The next one, you have to do the work carefully. The number of wickets taken by a bowler in a match
is given. First match, how many wickets he had taken? 2. Next, 5. So in every match he is taking wicket. No 0 wickets anywhere. He is a good bowler. Anyway. Then mode is there. चलिए कौन सी वैल्यू है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और कुछ नहीं. अब टैली मार्क्स करिए. चलो पहली वैल्यू कौन सी है? 4, एक टैली मार्क. 5 टैली मार्क. देन 3, 6 है. ओके. 3, 4 में सेकंड वन, 3 में सेकंड वन, 2 में फर्स्ट वन, 3, 5. बस हो गया. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो ये है. So the mode is 3. So its answer is that clear? So all the questions that we have seen from 21 to 30 were based on 9th standard statistics chapter. Alright? So see you with more objective questions in this chapter in the next part, that is part 3. Alright? Till then, goodbye. Have a nice day.